नमस्कार दर्शकों, मैं संतोष कोहिकर आप सभी का किड्स इंटेलिजेंस इस संस्था की तरफ से आज के इस विशेष मुलाकात में तहे दिल से स्वागत करता हूं। बच्चों में बौद्धिक विकास करने तथा उनकी क्षमताओं को बढ़ाने में किड्स इंटेलिजेंस संस्था का विशेष योगदान रहा है। इस संस्था की शुरुआत 2009 में श्रीमती शुभदा भावे इन्होंने मुंबई से की थी। किड्स इंटेलिजेंस ये एक गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड संस्था है और ISO 9001 2015 से प्रमाणित संस्था है। Abacus Vedic Mathematics ऐसे विषयों को पढ़ाकर संस्था बच्चों के जीवन में अमूल्य योगदान दे रही है। पिछले 12 साल से 1000 से भी ज्यादा बच्चों ने यहाँ पर Abacus और वैदिक मैथ की शिक्षा को हासिल किया है। 20 एक्सपर्ट्स इन हाउस टीचर्स की टीम अलग अलग 13 देशों में बच्चों को इन विषयों को सीखने में मदद कर रही है। ये संस्था बच्चों के साथ साथ टीचर्स को भी ट्रेन करने के लिए ट्रेन द टीचर्स का कार्यक्रम चलाती है। दोस्तों, आज इन 12 सालों में किड्स इंटेलिजेंस से हजारों से अधिक माता पिता और उनके बच्चे एक परिवार की तरह जुड़ चुके हैं। मित्रों, हर साल किड्स इंटेलिजेंस अपने होनहार विद्यार्थियों को और उनके माता पिता को सम्मानित करने के लिए एक थीम चलाते हैं जिसका नाम है सुपर हीरो फेम शो। ये एक अनोखा शो है जहां पर बच्चों की मेहनत को नवाजा जाता है, उन्हें एक मंच दिया जाता है अपनी शिक्षा की सफलताओं को दूसरों के साथ बांट सके। सुपर हीरो फेम शो बच्चों के साथ साथ उनके माता पिता के योगदान को भी सम्मानित करते हैं। दुर्भाग्य से पिछले 2 साल में कोरोना महामारी के चलते शिक्षा का माध्यम पूरी तरीके से बदल गया। एज वी ऑल नो कि अभी पढ़ाई ऑनलाइन शुरू हो गई। जो बच्चे पहले ऑफलाइन पढ़ रहे थे, अब उन बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई पे ध्यान केंद्रित करना पड़ा। शुरुआत में ये बदलाव सभी के लिए बड़ा ही मुश्किल था। बच्चों के साथ साथ उनके माता पिताओं को भी कई दिक्कतों का सामना उठाना पड़ा। कभी डिवाइस नहीं था, कभी डिवाइस था तो उसे किस तरीके से ऑपरेट करे उसकी जानकारी नहीं थी, कभी नेटवर्क नहीं था तो एग्जाम कैसे दें इसकी भी चिंता सताती थी, और ऐसी कई अन्य चुनौतियों भी उनके सामने थी। लेकिन ऐसी कई अन्य चुनौतियों के बावजूद किड्स इंटेलिजेंस ने ही नहीं तो विद्यार्थियों ने और उनके माता पिताओं ने अपने बच्चे की शिक्षा की सफलता को हासिल किया है। उन सभी बच्चों का और उनके माता पिताओं का किड्स इंटेलिजेंस की तरफ से आज के सुपर हीरो फेम शो में हम शत शत अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, आज उन्हीं में से एक कन्या और उनकी माताजी आज हमसे रूबरू होने वाले हैं। तो ज्यादा भी देर न गवाते हुए आइए मैं आपकी मुलाकात करने जा रहा हूं श्रीमती टीना जी से और उनकी कन्या अनया से। दर्शकों, श्रीमती टीना जी और अनया इस वक्त हमसे मुंबई के स्थित मीरा रोड से जुड़ी हुई है। मैं अनया के बारे में बताना चाहूंगा कि अनया की उम्र 6 साल है और वो सीनियर केजी में पढ़ती है। तो हम शुरू करने जा रहे हैं आज के इस विशेष मुलाकात को श्रीमती टीना जी और अनया के साथ। सबसे पहले टीना जी और अनया, आपका किड्स इंटेलिजेंस की तरफ से सुपर हीरो फेम शो के आज के इस मंच पे मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। वेलकम बोथ ऑफ यू। थैंक यू सो मच, इट्स अ प्लेजर टू बी अ पार्ट। ओके, वंडरफुल, थैंक यू सो मच। तो हम इस श्रृंखला की शुरुआत करने जा रहे हैं। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट our interview. Before going ahead, I would like to know something more from you about your feeling about the superhero fame show where we have nominated Anaya for today's interview. So I just wanted to know about your today's experience about this interview. Yeah, no, I'm in fact, very, very thankful, and I feel very honored that you've considered Anaya to be a part of the superhero fame show. I'm sure it's of great privilege for Anaya to be
to be a part, though she doesn't understand what we are talking today. Yeah. But I'm sure that, it's a hard work and her efforts that you all have sincerely recognized, and it's getting appreciated through this forum. All right. Thank you so much. So now going ahead, I would like to know from you, where did you come to know about kids' intelligence? So I'm a part of this community called MUMO, the Mumbai Moms group on Facebook, and I think through that I got in touch with Harsha ma'am, and I was actually looking out for Abacus because my elder daughter's done it. She's done for all the levels. She's completed till level 8, and she started again when she was very young. She's been part of various championships. She's won multiple trophies. So I also wanted Anaya to get into the course. And I was looking at something offline, and it was just in September 2020 when I started exploring. So I could find nothing which is offline, and I got in touch with Harsha ma'am, and she told me that, be rest assured, nothing would get impacted even in an online forum. I wasn't convinced, but she kept pushing me. She did a demo class with Anaya, and that's when I got sold on to her as a teacher and to Kids Intelligence as an academy, and enrolled Anaya for the course. So that's been my initiation into the program. Okay, that's great. Okay, I just wanted to know that which subject did you choose for Anaya and why? So like I said, we've chosen Abacus for her. And that's precisely because my elder daughter did it, and I saw she benefited a lot. And hence, I didn't even explore what other, Vedic maths, etc. are available, but I just wanted her to get into Abacus. All right. So you choose Abacus for her. Yeah. Okay. Any other special reason for choosing Abacus? I feel, it increases your logical brain. The logical side of the brain brings in a lot of rational thinking in a child. And I'm not even talking about how it enhances your math skills, etc. But yes, I think it enhances and increases the logical part or the rational part of the brain, and which is what was the main reason. All right. Okay. So now, Tinaji, going ahead, I would be interested to know about your journey with Anaya while learning this Abacus. So can you please brief us about your experience during this learning time? Yeah, sure. So like I said, we started in October 2020, and right now Anaya's in the 4th level. So she's completed additions and subtraction at an age. So when she started, she was in junior KG. And she at that time knew addition, just numbers up to 10. She didn't even know anything beyond it. And I was, like I said, I was very skeptical if she would be able to cope up, because my elder daughter got introduced when she was in the 1st standard. But for Anaya, it was junior KG and an online mode. But I'm very happy with the journey that she's undergone in these last 2 years now. She's learned addition, subtraction. She's learning multiplication now, 3 digits by 1 digit, and it's all very, very, very nice. Okay, so now moving ahead, during this experience, Tinaji, what all the qualities of a teacher from Kids Intelligence you observed? So I think the most important quality was patience, because these teachers are interacting with kids, and that too in an online mode, and teaching something which they have not been exposed to is not very easy. So I think I would attribute patience is as the one most important thing, and other than that is making learning very simple. So while it may sound very complicated, learning to add, learning to subtract, learning multiplications, but I think a teacher who makes these sound and make children do it in a very simple manner is I would attribute as key qualities of a teacher. What is the name of your teacher? Harsha teacher. Harsha teacher. Oh, so you enjoyed it, right? All right. All right. So now moving ahead again, the next question, Tinaji, for you is that during this learning process of Abacus, what are the changes that you found in Anaya? She's become very confident overall. So that
that scare or that fear of doing anything new, anything different, it has come out. I think she's more open to learning. She's more open to experimenting on newer things, and that's the biggest change I see in her. She's become more confident. Okay. So are you satisfied with the change? Oh yes, of course. Very happy. You are happy with the change, right? Yeah. Oh, wonderful. That's great. Okay. So my, further my question is related to the online learning. As you know, that since last 2 years of pandemic, the pattern of studies went online from offline. So the question is, how difficult it was for you? What challenges did you face in online learning, and how did you manage them? I would say the biggest challenge of online learning has been the connect. Because any learning involves a student and teacher to connect with each other, and only then the learning process begins. Online learning has completely hampered that connect. How much ever we try, it's very difficult to relate through the online mode. But yes, I would say that because that was the only mode left, there was no other option. I think teachers have made a commendable effort to utilize and interact as much as possible with kids. Okay, great. Okay, so would you like to give any message to our viewers? I would just say that Kids Intelligence is a very good platform for your children. They really understand each kid and treat each kid very differently. So it's not that even if it's a group of 3 or 4 students in a batch, not everybody is treated the same way, because the teachers understand each kid has a different level of learning and is therefore paid adequate attention to. So it's like a very, very trusted platform for kids to get groomed. Great, wonderful. So thank you so much, Tina ji and Navya beta, for joining us. Thank you so much for your valuable time. आपने जो आज आपका कीमती समय हमें दिया और आपने जो जानकारी हमसे शेयर की, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हमारी व्यूअर्स की टीम की तरफ से और किड्स इंटेलिजेंस संस्था की ओर से. थैंक यू वंस अगेन टीना जी और अनैया. हम इसी शुभ मंगल कामना के साथ आज का ये खत्म करते हैं कि आप जीवन में खुश रहें, सुरक्षित रहें. थैंक यू सो मच. Thank you so much. It was pleasure interacting with you. Thank you so much. Thank you once again. Bye. Bye अनैया. Bye. Take care. तो दोस्तों, ये थी टीना जी और उनकी कन्या अनया, जिन्होंने किड्स इंटेलिजेंस संस्था से जुड़कर एबैकस की ट्रेनिंग ली थी. और इस ट्रेनिंग के माध्यम से अनया के अंदर जो भी बदलाव आए हैं, वो बदलाव उनकी माताजी टीना जी ने हमारे साथ शेयर किया है. मैं आप सभी व्यूअर्स को यही बताना चाहूंगा कि आपको भी अगर अनया की तरह अपने बच्चे के कॉन्फिडेंस को अगर जगाना है, तो किड्स इंटेलिजेंस संस्था में आप कॉल करें, आप उनसे बातें करें. उनके इंट्रोडक्टरी सेशंस होते हैं, काउंसलिंग सेशंस होते हैं, उन्हें अटेंड करें और आप भी अपने बच्चों को किड्स इंटेलिजेंस के एबैकस, वैदिक मैथ्स और अन्य विषयों में एनरोल करें, ताकि उनका भी भविष्य अनैया की तरह उज्जवल हो.